Hello, good morning, everyone. Thank you for joining in. Today's class is for Rainbow Trial Group. Those who have joined the trial और जिनके मन में query है regarding anything regarding the setup or the course or any of the courses. ये trial का class इसलिए host किया जाता है so that all the participants who will be learners, they can make informed decision on what they are doing. Like this, that is important in the market too, that we have to make informed decision. तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डाउट क्लियरिंग। सो एनी क्वेरीज जो आपके इफ यू हैव, सो वी विल बी रेडी टू आंसर देम। जब तक आप क्वेरी पोस्ट नहीं कर पा रहे, लेट मी डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं सेटअप में। Those who are regular user, you must be aware. First of all, another table switch has been given for the strength table if anyone wants to use it. Though ये clearly possible tha regarding choosing the fountain of gold setup, but one can choose the table on and table off to remove any particular table from the chart. So that is, both the switches are now available individually for the tables. That is one update. And another is important one is, rather this one is more important, regarding the options. Options के regarding update किया गया है. Now it is directly giving what kind of strategy you should do. This is the bear call spread. The setup is asking you to do as per this time frame 125 minutes, and the first strike जो 21,900 आपको चूज करना होगा, and the next strike can be 22,100 rupees. Gap is usually recommended for bear call spread or bull put spread. Bear call spread or put spread, these are the main two trades that will be recommended in this short 1, 2, 3. In तीनों trade में this type of trade will be recommended. Now जब कभी कभी ऐसा आ सकता है, it is possible कि bear call spread और एक में आ रहा है bull put spread. तो इसका मतलब हो गया दैट्स बेसिकली आइदर बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर क्रिएट हो रहा है. सो these आर द बेसिक स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा. इसके अलावा टू अदर स्ट्रेटेजीज विच आर मोर पॉपुलर इन द मार्केट, दैट देयर आर टू अदर स्ट्रेटेजीज आर आल्सो रिकमेंडेड. Here are two trades, and previously there was one trade. Now this long option high risk trade will be removed. It is not doing that great. It is a signal. Sometimes it is giving quick profit. But if I go by the accuracy, which is the call is visible here. So I have decided in the next update of the RSI X, this call I very likely I'll be removing. It's a test going on broadly. Some calls are definitely profitable, it is, but some are not. Like one signal, these are not that profitable trades. So I'm considering at least adding a different trade, which will option long trade too, which is visible here. Currently, it is undergoing a test. That's why you don't have the alerts available for this trade, or it is not visible right now. But soon I'm expecting this trade to be visible also in the chart, and also alerts will be available for this option trade. So these are the new updates coming regarding option. और option के related मैंने एक series भी चालू किया है in YouTube, advanced option trading with the rainbow setup, जहाँ पे अभी तक I have discussed two strategies. One is this bear call spread, and another one is long iron butterfly. तो उसमें भी further strategies I will continue to add on a regular basis. Possibly I'm expecting to reach somewhere around 30 to 40, which will be possible to execute using the rainbow setup. Beyond जो call आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे अपने understanding को मिला के we can create this. For example,
ये जो बियर कॉल स्प्रेड आ रहा है 21,900 का, इट इज क्लियरली शोइंग दैट बुल स्प्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज हायर. बियर कॉल स्प्रेड में हमारे आउटलुक रहता है दैट मार्केट विल आइदर नॉट डू एनीथिंग और इट विल मूव लोअर. काइंडली डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. सो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेटेजी रहता है कि रैदर वो मार्केट कुछ ना करे या तो मार्केट ग्रेजुअली डाउन मूव करे. बट विद दिस ग्रीन सॉक्स इट इज क्लियरली शोइंग दैट बुल्स आर फाइटिंग बैक. साथ में बुल स्प्रेड का विन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब बायर्स का जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द बियर स्प्रेड. तो इसके साथ साथ दिस बियर कॉल स्प्रेड के साथ इफ वी डू अ बुल पुट स्प्रेड जो सेटअप नहीं दिखा रहा है, विथ आवर अंडरस्टैंडिंग सिंस फ्लैट जोन will act as strong support or resistance. If you bring the candle, you'll see it is taking resistance from strong area, this support area. So we can go for 630 का कोई call strike नहीं होता. We can go for 650 and that will create basically, हम लोग उसके साथ last video I have shown in the YouTube, it is creating a long iron butterfly instead of bear call spread. और अगर बटरफ्लाई को हम लोग कॉन्डर कर देंगे, फॉर एग्जांपल वी कैन गो फॉर 21,900 कॉल सेल, 22,000 कॉल बाय, we can go for 21,650 or the bottom is will be risky but can do. Best is 21,650 और नीचे kind of 21,500 या 21,550. This spread if we create that will be an iron condor. So butterfly में risk का जो कार्व रहता है, रिटर्न कार्व इज लाइक दिस, मींस हम लोग एट द मनी कॉल सेल करते हैं. लेट्स गो टू ऑप्शन चेन. 21,800 एट द मनी है. व्हाई इट्स एट द मनी? बिकॉज प्राइस इज क्लोज टू दिस स्ट्राइक, सो दिस इज एट द मनी. सो एट द मनी स्ट्राइक हम लोग सेल करते हैं इन द बटरफ्लाई. दैट मीन्स हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल जो है दैट इज ऑन लाइक अ पॉइंट. एग्जैक्ट 21,800 पे क्लोज हुआ, then we will reach our strategy, the iron butterfly will reach the maximum profit potential. Whereas if we go for a rather condor, हम लोग का प्रॉफिट ऐसे और यहां, so we have a zone जहां पे हम लोग का प्रॉफिट will be maximum. So beyond जो कॉल आ रहा है, बियॉन्ड उसके जाके ये थोड़ा ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन गो फॉर अ रादर इंप्रूव्ड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज. So this is the changes. So if you have any query, not able to screen stocks, my time frame 125 minutes, please advise. विपुल जी बोल रहे हैं. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था कि कुछ जो स्टूडेंट्स इवन जो सब्सक्राइब किए हैं दे आर स्ट्रगलिंग, वेयर एज लार्ज सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल. सो कुछ जगह पे जरूर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों को. सो उसके लिए जो होल्ड किए हम लोग लास्ट, जो लोग पार्टिसिपेट किए, टू ऑफ यू अगर जो लोग मेन ग्रुप में थे, वी हेल्ड counseling session with Parijat, where more clearer picture were given with a private discussion. But majority जो लोग सफर कर रहे हैं, that is because the grooming session को आप लोग ज्यादा फोकस नहीं दिए. The grooming session is the most important क्योंकि trading is beyond the, दिस इज द अ टाइमिंग टूल. ये जो बेसिकली हम लोग रेनबो सेटअप देख रहे हैं, फाउंटेन ऑफ गोल्ड, दिस इज बेसिकली अ टाइमिंग टूल. इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को काउंटर करना पड़ता है. दैट इज, वन इज ग्रीड एंड वन इज फियर. फियर इज द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट important one to manage than the greed as a retail trader. So how to do that, we go through in the grooming session. So I think especially those who joined in the Rainbow 3 batch and 4 के लिए तो grooming session हुआ ही नहीं है.
So I have decided, so we have instead next जो grooming session था, that was on March 11. Instead of March 11, we have decided to prepone it, already announced in the batch 4, कि हम लोग इस Wednesday एंड दिस कमिंग फ्राइडे जो रेनबो का क्लास यूजुअली रात 8:30 बजे होता है, रात 8:30 से 1.5 आवर क्लास और मैक्स 2 आवर क्लास. सो वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग ग्रूमिंग सेशन लेने वाले. सो इन दिस ग्रूमिंग सेशन इंपॉर्टेंट 3 पार्ट ऑफ डिस्कशन. वन इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, कैसे मार्केट के साथ बात कर सकते हैं. लेट्स क्रिएट समथिंग. Let's forget the rainbow for now. Okay. Though this is not part of the trial class, but as you are already here, you'll get to learn this. First of all, हम लोग एक वर्चुअल हॉर्स रेस में चलते हैं. ठीक है. तो ये जो हॉर्स रेस है, इसमें हम लोग बेट करेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग है, आप दिस इज बेसिकली हॉर्स बेटिंग. अब हॉर्स बेटिंग इज नॉट लाइक जो ट्रेडिशनल सेंस में हम लोग सोचते हैं, वैसा नहीं. हॉर्स बेटिंग इज बिकॉज मार्केट जो हम लोग के साथ बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग टू अस, एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि मार्केट के बात सुनना. व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल, डू अकॉर्डिंगली एज मच एज पॉसिबल. सो उसके लिए मार्केट के साथ जो हम लोग बात करते हैं, मार्केट टॉक्स विद दीज 3 हॉर्सेस. सो ये जो हॉर्स रेसिंग पे हम लोग चल रहे हैं, दैट इज देयर आर 10 हॉर्सेस हियर. देयर आर 10 हॉर्सेस एंड यू हैव टू बेट ऑन द हॉर्सेस. आप बेट चेंज कर सकते हो बीच में. यू कैन चेंज योर बेट्स व्हाइल द रेस इज ऑन, बट फाइनली यू हैव टू चूज वन हॉर्स. एंड बिफोर यू वी स्टार्ट, यू विल ऑल्सो हैव टू चूज वन हॉर्स. मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं. सम इंफॉर्मेशन दैट देयर आर 10 हॉर्सेस. नंबर 7 हॉर्स has won 6 times. 6 बार जीत चुका है नंबर 7 हॉर्स. ये जो नंबर 3 हॉर्स, that has won 3 times. And जो नंबर 10 हॉर्स, that has won 1 time. तो आप किसके साथ बेट करना चाहोगे? Which horse you will bet with? Number 7 has won 6 times. Number 3 has won 3 times, and number 10 has won only 1 time. रेस चालू होने जा रहा है. अगर अनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, मन में सोच लीजिए. Majority of you are choosing number 7. Why? Because the trend is the most important of the horse. If you can apply this is a common sense in this horse race, you need to apply this in your trading as well. अब horse race चालू हो चुका है. It has started, and as expected, number 7 is leading. There will be 10 circle, 10 चक्कर होंगे. उसके बाद जब नंबर 7 वाले चक्कर में, when we are the 7th round, आपको दिख रहा है, आप बायनाकुलर से देख रहे हो, और जैसे आप रास्ता क्रॉस करने के टाइम, when you cross road, you can understand looking at the car, which car is moving fast, you will be able to cross or not. आपके मन में कैलकुलेशन चलता है. You are looking at the horses और आपको दिख रहा है number 10 and number 3 are increasing speed. अगर ऐसा हुआ, you can calculate within the next one circle, this number 3 and number 10 will cross number 7. Will you like to change your bets now? Which horse will you bet now? Number 3 or number 10? Number 3 has won 3 times. Number 10 has won 1 time. And both are increasing speed, will cross number 7. Majority of you will be choosing number 3. ये जो आप चूज कर रहे हो, जहां पे आप बेट चेंज करने का, that is momentum. This is called momentum. अब number 3 and number 10 both are running, and आप ब्रोकर आपसे पूछ रहा है, फाइनल कॉल, लास्ट बेट, कौन सा हॉर्स? आप यू आर लुकिंग इंटेंसली, एंड आपको दिख रहा है कि
अचानक से नंबर 3 के हॉर्स ट्रैक में देयर वाज अ स्टोन, एक पत्थर था, और उसके साथ नंबर 3 का टक्कर हो गया। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है, विच हॉर्स विल यू नाउ बेट ऑन? नंबर 3 का टक्कर होते ही नंबर 3 थोड़ा स्लो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, विल नंबर 3 स्टॉप इमीडिएटली? Now you are all choosing number 10, and number 10 won the horse, and wo jo takkar tha with the stone, that was the price action. Price action is the first trigger that shows entry and exit. Price action, momentum and trend, these three are the important horses जिसके जरिए हम लोग मार्केट के साथ बात करते हैं। Majority of the quantity we will do only when we are with the trend. When we are going against the trend, then we do less quantity. So trend is helping us to do risk management. Risk management, full form is not risk management, it's risk exposure management. Risk exposure is equal to the stop loss multiplied by number of lots you are doing. That is the risk exposure. With the trend, higher risk exposure; against the trend, lower risk exposure. Now, every trader, those who have not done this exercise, despite being in the rainbow, you first do this. Just give me a moment. Otherwise, success cannot come. It does not matter whether आप rainbow में हो या फिर you are using any other setup. Without this, success is not possible consistently. To have a trading plan. Trading plan has to answer this question: an entry trigger that is based on precise conditions which triggers a buy or sell in specified securities. This is first has to be handwritten. आपके हाथ से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में गए हो तो ऑप्शन में लिखना पड़ेगा what is that you are doing. If you stock, first of all, ये इसके लिए हम लोग क्लास लेते हैं. There are form आपके साथ शेयर किया जाता है जिसमें पारिजात shows his trading plan, I show my trading plan in the class. This is as part of the grooming class 1, 2 and 3. So based on this, आपका trading plan थोड़ा different हो सकता है, but you'll have to, whatever it is, you'll have to write by your own hand in your trading diary. Trading diary होना must in my class, where the first page is the trading mantra. Second, we do the fear management. Fear management, this is the fear management. When you are following the rules, there are nothing to be afraid of. And और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप करेंसी कमोडिटी फाइन, बट इफ यू आर इनटू स्टॉक्स देन समथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉरगिवनेस. आपको खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 1000 स्टॉक्स. इवन इफ वी बाय ऑन अ बाय ट्रेंड, 700 stocks will go up. कितना पैसा होगा आपके पास? How much money you have? Our focus is we want to buy 20-25 stocks that are going to give immense return as per our जो हमारे required हम return है, जो हम लोग पहले decide कर लेंगे what is our greed level. It will reach our greed level and will be satisfied. This process I will continue to repeat for next 1, 2, 3, 4 years, and then I will become rich. This is basically the process where a successful trader को करने के लिए this is a must have. और उसके लिए what we need, first we need a trigger. Let's bring a trigger. This is how I start discussion my trading strategy. और जो ये डिस्कशन इतना पॉपुलर हो गया कि नाउ पीपल आस्क फॉर इसका एक्सेस. व्हाट इज माय ट्रिगर? माय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज सिंपल. Every great trader has told me that price action is important, so I'll go with that. Price action I have learned from YouTube candlesticks, that if it's a green candlesticks means buyers have won,
opening is lower, closing is higher. If it's a red candlesticks, it's a selling candle. So my strategy, I will do every green candle I buy, every red candle I sell. Now this strategy will not be a successful one. If I ask why, if I go to the fundamental reason this strategy is not successful, because it is only taking into account one of the horse, that is price action. That is one horse. Secondly, this strategy will not be helpful. That's why majority people complain that price action not always work, because this strategy is only considering the y-axis. It is not considering the x-axis. So improve this strategy. So what I decided as a novice, so let's do one thing. Let me do a better chart, which is Heikin-Ashi chart. Now, if I enter the green candle or I exit the red candle, now it looks better. But still my strategy will not be good enough. It is an improved, but not enough. Once again, I'm considering only price action. Then these are the areas my strategy is going to have a drawdown. Now to improve upon this one, let me what I do. I will apply the trend. Trend is, this one is my short-term trend. This one is my long-term trend. Now my rule is I buy the green candle, but when both the lines are green, but I don't sell the red candles. I just profit book. Like here, I immediately buy once again the green candle, and red candle, I profit book. Now you will see the strategy is already now in its improved version, because now I'm adding another horse to it. Now, if I feel that this is still my buy trigger, I have to buy it. Now I will buy it with lower quantity. The trend is doing a risk management. I can decide what kind of trade it is. For example, this is my buy trigger. I need a trigger. Without trigger, koi trading plan nahi ho sakta. So this is my buy trigger. Now I know if this is my buy trigger, this is against the short trend. This is against the long-term trend. So here, this buy trade is a double contra trade. This is also a full green candle, which is also a buy signal, because every green candle is a buy signal, or this green candle is also a buy signal. If I look closely here, one short trend is with me, long-term trend is not with me. Then here my trade is not double contra, but contra trade. Another breakout, another green candle after red. This is another point of entry. Now here both the trends are with me, or say here both the trends, or say here both the trends with me. So now my trading plan has to have a method to answer this risk management question, how much to buy or sell. So my trading plan has to include that double contra I don't buy, single contra I try with lower quantity. Now when I'm with the trend, I do higher quantity. So help is given regarding writing this trading plan, both by me and Parijat. Especially those who have written the trading plan as asked. Majority of them do not ask what are the trades that are coming, or should I exit this trade? Because the trading plan is also already answering for you what is your risk management plan. Now let me go back
to the Rainbow setup, since this query was the first query that I got. This is the, if I can explain the entry and exit in case of stocks. So let me explain it. I fully use this setup for my trading. I use the other setup just for explanation, but it itself became very popular. That is also itself is a quite a good strategy. I'll rank it in my number 3 or possibly number 4, number third best, fourth best strategy, I'll call it. But this is a much superior strategy, and this one I fully trade with. So if you go to my latest analysis, which I have posted, that is on the banks. So every week I've already started doing it. Sunday, Saturday, currently one of my family member has not been well, so I've not done the full scan. But every week I go to 750 stocks, Nifty 750. This is now has become an habit. Now I go to 750 stocks. As you can see, I've already started marking them. I mark them. So this helps me that I'm aware of their charts with a quick glance, that what the chart is talking about. So based on this, I select these stocks, 750 stocks. So bank stocks, we have individually, I do it because bank stocks are very important. They are the money creator. पहले पैसा बनाने के लिए समझना चाहिए पैसा है क्या, कौन बना सकता है ये पैसा. बैंक्स कैन क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर. They don't need your deposit to create loans. Simply you go to bank, they will debit one of your account and credit another account, and money is created. You will pay back with an interest. Banks do not need your money, your deposits to create more money in the system. So that's why banks are very important to look at every week. So I kept a check on the bank. So I did a scanning. So stock के लिए जो rule मैं follow करता हूँ, not necessarily all the students are following. In last class discussion, I have shown how to select stocks if you are going for the 75 or the 125 minutes. The entries are same because there are only two type of trades in this world. If you are going for buy, I'm not talking about options. ठीक है, option there are different strategies, but future and cash. If you are in buy, you can do only two trades: buy breakout or buy support. Any other trade that you are doing, that is a hope trade, and hope trade market is not very kind to. So every time that you are taking a trade, you'll have to judge what kind of trade I'm doing. Am I doing a buy support? Am I doing a buy breakout? So my first job is to go to the weekly chart, and in weekly chart, first is the stock selection. So I go for cash stocks weekly for stock selection. Why this is important? This is very important for stocks. I don't need this much effort for currency commodity. There are only 8 counters. It will take half an hour just to do all the technical analysis as per Rainbow, what I want to do, where I want to do, just takes half an hour per day. But stocks are the problem because there are thousands upon thousands, and I want to find the gem of the gem, which will give me this kind of run. और उसके लिए stocks are means great stocks are not important for majority of us. Majority of us, अगर हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं thinking of us, हम लोग fundamental analyst will not attend this session in the first place. They will be reading the annual report. They don't care about the stock price. Stock price is the last step for them. They believe in the company. They are interested in the business. But for us, we are going for a techno funda system. So here, a good stock, everybody knows Reliance. Reliance Industries is a good company, great company, a very important company for India.
structurally important company for India. Now, anybody bought here, Reliance did not do well. What happened? The stock was not good. Anybody bought here, kept on the Reliance, remained on range since 2021. Reliance was still a great stock. Then the great stock or the gem stocks do not matter. What matter is the gem phase. Gem stock, gem phase, you get superb run. Gem stocks, जानने का obviously you have to focus on fundamental. Gem phase we can get via this strategy TMPV. तो उसमें high quantity and low quantity. When I get a buy signal like this one in weekly, and it is coming from this kind of support after consolidation, I'm inclined to do some trade. But this is risky. इस जगह पे trade full quantity डाल देना risky. And that's why we have the FOMO quantity, जो मार्क मिनर्विनी भी डिप्लॉय करते हैं, जो वो कहते हैं उसको पाइलट क्वांटिटी. आई कॉल इट FOMO क्वांटिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट. बहुत बार लगेगा एक स्टॉक ऊपर जा रहा है और यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू आर फ्रीज, यू आर फ्रोजन. Just do a few trades, maybe 2-3 stocks, maybe 5,000 rupees, maybe 10,000, जो आपका FOMO quantity आएगा. We discuss what is the FOMO quantity or what should be your FOMO quantity. So this kind of FOMO quantity I can do. Minimum requirement जब fulfill हो रहा है रेनबो का, minimum requirement रेनबो का is full green candle or a full red candle to initiate any kind of fresh entry. मतलब this is a comeback from a support, but we can't enter unless we have a full green candle. You may not enter here. Your trading plan may include that you enter when the background is also green, which is the short-term trend. But minimum requirement is a full green candle. I prefer full green candle with short-term momentum with me. Why? Every great trader has said that the best of trades are the ones when you enter that goes immediately into profit. And that is only possible जब momentum वाला घोड़ा, momentum horse is firing in our favor in the short term. Short term में हमारे साथ दौड़ रहा है ये momentum का घोड़ा. बेस्ट ऑफ द ट्रेड्स तभी बनेंगे जब तीनों का तीन घोड़े हमारे तरफ होंगे. और एग्जिट के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है मार्केट में. मार्केट आपसे बात कर रहा है एग्जिट का. मार्केट एग्जिट का बात करेगा ओनली देयर आर टू हॉर्सेस दैट शो एंट्रीज एंड एग्जिट. ट्रेंड इज नॉट द वन. ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द हॉर्स which decides which direction we should play. कौन सा डायरेक्शन में मार्केट का जीतने का लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है. But entry or exit is decided by the two horse, short, this trend and momentum. So after buy entry, these red caps I use as partial exit. उसके साथ साथ रेनबो का अनदर रूल है कि जो ब्रीच नहीं किया जा सकता. लाइक फॉर फ्रेश एनी एंट्री वी नीड अ फुल ग्रीन, फुल रेड. सिमिलरली अगर बाय किया हूं, इफ आई बॉट इट एंड इफ आई गेट अ फुल रेड कैंडल, कोई भी रीजन हो, इवन इफ इट्स आई फील अ गुड स्टॉक, ग्रेट स्टॉक, it's a full exit, no question asked. Rainbow maximum stop loss is the candle bottom, which is very dynamic. If there is any chance of reversal, the maximum stop loss can jump up. Maximum stop loss hit, we exit, no full quantity, no question asked. So these are the two rules we do not breach. Other than that, you can bend other ones a little bit here and there to write your trading plan. When I enter a trade, when entering a trade for the first time, I very much prefer
to keep the maximum stop loss, and I always enter with my FOMO quantity, never with the full quantity. क्योंकि पूरा दिन का पानी भी हम लोग एक साथ नहीं पीते, खाना नहीं खाते, सिमिलरली फुल एंट्री हम लोग नहीं लेते. क्यों? What is the reason for that? There are only 4 areas where we can risk manage: what to buy, when to buy, how much to buy, when to exit. इसमें ये लिखा नहीं है कि हम लोग के बाई करने के बाद वो स्टॉक क्या करने वाला है. We have zero control over that. We don't know. Nobody has control over it. So no point doing any kind of risk management over there. Risk management will start upfront for here. First is here. This is the most important for stocks. What to buy. इसीलिए मेरा पहला काम हर वीकेंड में होता है एक यूनिवर्स बनाना, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं. धनलक्ष्मी बैंक वंडरफुल रन दिया. वीकली सिग्नल जो आता है रेनबो बाय का, आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस वीकली बाय सिग्नल. एंड दिस इज धीरे धीरे चेंज हुआ. उसमें वीकली चार्ट इज फॉर माय सिलेक्शन. As long as weekly criteria are selected, yes, stock will remain in my list, in my focus. My weekly criteria is that it will satisfy at least one of this. और उसमें भी बात है, स्टॉक का ये वेरी 3 इंपॉर्टेंट फेज है. ये हर डिफरेंट फेज में स्टॉक का बिहेवियर इज नॉट सेम. Let me show you one trade of Mr. Mark Minervini and end this question once and for all कि हम लोग लेट हो गए. We have entered late. Mr. Minervini publicly announced that he is entering Nvidia here. I have seen personally that Mr. Minervini prefers stocks which goes into TMP2 phase. TMP2 phase is his preference. He does not buy TMP1 and pre-TMP stocks. Parijat, I have seen, he prefers TMP2 stocks. I many a time go for pre-TMP and TMP1 stock. You will see in our trade suggestions pattern, the trades that Parijat suggests immediately runs into mega run. It starts giving good movement, 50, 10, 12, 20% move within few days. Whereas the stocks I suggest take some time, then they skyrocket. And for example, the stock I suggested, Suzlon at 10 rupees, Idea at 19 rupees. So different early levels. So my trading plan is something where I sometimes try out the pre-TMP and TMP1 phase. In pre-TMP phase and TMP1 phase, the stock run is not that great. You will see many a times big drawdown. Pre-TMP stock phase, you enter a stock, the stock generally will give, matlab profit में चला गया 3 to 3, 7, maximum 10%. उसके बाद you will see big drawdowns. TMP1 phase, जो run 10% हुआ था, if the stock has moved to TMP1, which is background now green, this is where it is TMP1. तब वो 10% का extension goes to 20, 25, 30%, CYIENT. You cannot expect a quick run in the TMP1 phase. TMP1 CYIENT gave 25% return. It took 6 months. TMP2 phase, the stock gave a 25% return within 1 month. And उसके बाद तो धीरे धीरे fly हो रहा है. For majority of the quantity, higher quantity, so I preferred with stick to the rule. For FOMO quantity,
I try out early buying. But उसके लिए भी I apply this rule, no buying unless I get a TMP one phase. Pre-TMP I usually do not buy. TMP one phase, that is minimum. एक स्टॉक जब फॉल कर रहा है वो मेरा सबसे फेवरेट फेज है, बिकॉज आई कैन प्लेस अ सिंपल बाई ऑर्डर, मतलब बाई अलर्ट, and go away from that stock. This will give me an early entry opportunity. So I always use this alert in weekly in different stocks, especially those I feel can go for reversal. और उसके साथ साथ मैं 750 स्टॉक स्कैन करके ये लिस्ट बनाता हूं. सो उसमें धनलक्ष्मी बैंक इन वीकली, दिस इज सेटिस्फाइंग माय क्राइटेरिया. उसके बाद मैं आ जाता हूं इज माय एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, जहां पे द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड इज व्हेन टू बाय एंड सेल. The weekly time frame is deciding what to buy and sell, and this is deciding when to buy and sell. So I come down to the daily chart, and in daily chart, basically my vision is clear. What I want to do. What I want to do is I want to buy. Next question, I ask the market. Hey market, can I buy? Can I buy you? The market is telling me with the appearance of the price action का horse मुझे बोल रहा है don't buy. The momentum का horse, which I majority of the momentum I want with me. जब मैं trade ले रहा हूं, I want the momentum वाला horse with me. That means there are 8 momentum factors, 1, 2, 3 and 5. 3 plus 5, 8. I want at least 4 to 5 of the momentum to with me, जो यहां पे नहीं है. Minimum criteria is a buy full green candle, which is not there. But this stock is satisfying my criteria. So what I will do, my trading is Alt A. First is this signal I will use, which is this buy signal. When I get a buy signal, I want to ensure a few things. First, I get price action bullish, means a full green candle, which is the minimum criteria for rainbow. Second is I want the short-term momentum with me. That is definitely. I want majority of the momentum with me. और वो आपको हो जाएगा. सुनने में जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिखने में उतना एक्शन में नहीं होगा. मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम विथ मी दैट आई वांट. और उसके साथ साथ ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, स्ट्रेंथ स्कोर, जो मैं वीकली में यूज कर रहा हूं फॉर स्टॉक सिलेक्शन, दैट मींस आई वांट अ 70 स्कोर इन वीकली. स्टॉक आरएस स्टेटस एज राइजिंग बुल, स्पीडिंग बुल एंड एक्सट्रीम बुल. स्टॉक स्पीड स्कोर 10. ये सारे क्राइटेरिया आई वांट इन वीकली. इन डेली में आई मिनिमम वांट ये जो है ये एटलीस्ट न्यूट्रल जोन में हो. न्यूट्रल जोन मींस बैकग्राउंड इट विल बिकम येलो. द वैल्यू इज 65. इट विल बी एटलीस्ट पॉजिटिव. स्पीड अगर पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में, देन ऑब्वियसली इफ आई एंटर, वेरी लाइकली द स्टॉक विल गो डाउन. इसके साथ साथ कितना क्वांटिटी करना चाहिए, दिस इज अनदर क्वेश्चन. अ फोमो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, मेरा डिफरेंट सेटिंग मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं. जैसे देयर आर ओनली 5 गियर्स इन अ कार. सिमिलरली माय क्वांटिटीज विल बी डिसाइडेड अप फ्रंट. ये क्वांटिटी वाले ग्रिड मैनेजमेंट डिस्कशन के पार्ट है. व्हाट आई डू, फोमो, डू आई डू हाफ फोमो, do I do FOMO plus first level quantity, or do I do full quantity? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है. लेट्स गो टू नाउ कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली, जो हम लोग डेली के इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग. इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है कि विन प्रोबेबिलिटी, अगर all these criteria satisfying but win probability is low, वो ट्रेड में we can do risk management, means less risk exposure.
वो दो तरीके से किया जा सकता है, आइदर टाइटर स्टॉप लॉस और लोअर क्वांटिटी, क्योंकि रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टॉप लॉस। नाउ कमिंग बैक हियर, मुझे दिख रहा है दो रिस्क मैनेजमेंट टूल आप लोगों को दिया गया है, वन इज स्टॉक अल्फा एंड वन इज स्टॉक बीटा। स्टॉक बीटा मतलब अगर 2.5 मीन्स इफ निफ्टी मूव्स 1%, this stock can move 2.5%, means if nifty drops 1%, just which is a normal correction, then this stock can correct 2.5% or more. That means in this stock, if I am interested and this is the reading coming, the tighter stop loss will not work. That means the risk exposure management has to be done with lower quantity. This is how I decide कि कैसे मूव करें, और इसमें कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज और कोई हरी नहीं है। ऑल वी नीड आर 25 स्टॉक्स एवरी टाइम। एक पोर्टफोलियो तो चार्ट होगा विच विल हेल्प अस रीच आवर गोल, और गोल हम लोग पहले डिसाइड करेंगे with the greed management calculator, that how much return if I get it, I will not be a nagging child. जो भी आप लोगों को डिसाइड करना होता है, दिस इज अ ग्रीड मैनेजमेंट का पार्ट, वी हैव टू डिसाइड अप फ्रंट। सो टू मेक 10 lakhs into 25 lakhs in 3 years, you don't need superb return, you just need 2.8% per month. It is basically the consistency that matters. अगर आप रेगुलर विथ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, यू विल गो थ्रू दिस, राइटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्लान बिफोर हैंड, तो आप लोगों का ट्रेडिंग में कोई भी इशू नहीं रहेगा। और इसीलिए दो दिस इज यू हैव सब्सक्राइब द कोर्स, जिन जो भी सब्सक्राइबर्स हैं यहां पे ऑलरेडी, यू मे हैव सब्सक्राइब इट फॉर 365 days, and Elon Markets is showing the clock based on 365 days. You are already given 35 plus 20 means 55 days extra to spend time for this. 20 days of trial plus 35 days extra, so that आप शांति से ये जो काम है इस पे ध्यान दे सकते हैं। ये ट्रेडिंग प्लान का राइट होना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपका फियर मैनेजमेंट होगा। विदाउट राइटिंग दिस, फियर विल कॉन्स्टेंटली ग्रीप यू। So that's it from my side regarding कि queries, एक बेसिक आंसर कि मैं कैसे ट्रेड सिलेक्ट करूंगा, एंड डिटेल आंसर ऑब्वियसली ये जो ग्रूमिंग क्लास आ रहा है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मोर। ये जो हम लोग आज एक बेसिक डिस्कशन किए कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग मंत्रा, सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट फ्रॉम ग्रूमिंग क्लास 1, 2 and 3। उसके बाद इफ यू डू एज आस्क्ड, राइट योर ट्रेडिंग प्लान, then you can significantly become the profitable trader that you seek to become। और उसके साथ साथ बाकी हेल्प भी किए जा रहे हैं। हम वी जस्ट हेल्ड अ सेशन लास्ट वीक कि कैसे शॉर्ट ट्रेड्स डालने हैं, सो दैट यू कैन, आपको बेटर ग्रिप हो सकता है शॉर्ट ट्रेड्स में। शॉर्ट ट्रेड को जानना जरूरी होगा। आई एम नॉट फॉर डेरिवेटिव का मैं, I'll not say I'm a biggest fan. My personal love is currency, so that is a derivative. So I'll go to derivative. But with stocks alone, ये जो basic benchmark मैं रखा हूं कि 35% return, otherwise why we are into here? इतना रिस्क लेके क्यों? फिर तो you can go for mutual funds and invest in there. There is no reason to be here. सो मिनिमम एक बेंचमार्क सेट करना ही पड़ेगा। सो 35% के नीचे का बेंचमार्क आई विल नॉट एक्सेप्ट। जो लोग लॉस मेकिंग है, डोंट बी ग्रीडी, गो फॉर द 35%, दैट इज अ वेरी गुड बेंचमार्क।
टेक अ रिलैक्स्ड अप्रोच एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट जैसा बोला जा रहा है. फर्स्ट स्टॉप मेकिंग द लॉस. और उसका फॉर इंपॉर्टेंट पार्ट ही है ये ट्रेडिंग प्लान लिखना और हाथ से लिखना. ऑनलाइन फॉर्म मैं दे चुका हूं. ऑनलाइन फॉर्म हम लोग फिलअप करना सिखाएंगे, बट हाथ से लिखना इन योर हैंड. 4 चैप्टर्स होंगे आपके ट्रेडिंग डायरी में. भले ही आप अपने ट्रेडिंग का ट्रेड्स एवरीडे लिख रहे हो कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस प्लान. फर्स्ट इज द ट्रेडिंग मंत्रा. सेकेंड इज द फियर मैनेजमेंट, जिसके अंडर ये ट्रेडिंग प्लान आ रहा है. थर्ड विल बी द ग्रीड मैनेजमेंट. एंड फोर्थ इज द जनरल रिस्क मैनेजमेंट रूल, जो इज विच इज बियॉन्ड एनी सेटअप, जो हम लोग एक फॉलो करेंगे. तो उसका दीज आर द 4 चैप्टर्स इन आवर ट्रेडिंग डायरी. सो दीज इसको फॉलो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है. कोई जल्दी हड़बड़ी है नहीं. हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द साइकिल में है. ये जो स्टॉक मार्केट का फायरिंग हो रहा है, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द साइकिल. इस साइकिल में ज्यादा ग्रीडी होके जंप करने का जरूरत नहीं. एंजॉय द राइड, बट ओवरली ग्रीडी होके हो जा रहा है सब कुछ, सोचने का कोई जरूरत नहीं. मार्केट वॉज देयर बिफोर वी स्टार्टेड ट्रेडिंग. इट विल बी देयर व्हेन वी आर नो लॉन्गर देयर इन दिस अर्थ. सो दिस इज अ लॉन्ग गेम. टेस्ट मैच है, वन डे नहीं है. सो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन वट एवर ऑप्शन का लिखना विल बी अ लिटिल ट्रिकी. मैं उसमें हेल्प करने की आई ट्राई माई बेस्ट. उसमें एक लिटिल प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट अ डायरेक्ट ट्रेडर बट ऑफ ऑप्शन, whereas currency, commodity, stocks, futures fine. तो उसके लिए हेल्प के लिए I have started this YouTube series. So those who are already have some experience of live trading options, you can take help from the YouTube videos along with the rainbow setup. So do we have a grooming class? Yeah, no sir, we don't have grooming class today. आज कोई क्लास नहीं है. ये रेनबो का क्लास usually we hold on वीकडेज. उसमें मार्केट खुला हुआ रहेगा, कमोडिटी मार्केट, लाइव मार्केट में कोई भी डिस्कशन, कोई भी ट्रेड सजेशंस आपको चाहिए, ऑल कैन बी डन. टीएमपी ब्रीफली की समझने की, टीएमपी इज बेसिकली इट्स नॉट टीएमपी, इट्स वन कंपोनेंट जो दिखा नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है. इट इज यू हैव टू गो टू समवन आस्क इफ दिस इज रिटन बाय मी. इट इज रिटन बाय मी, but it is a free indicator. You don't need my permission to use it, but you'll have to find it. I will not give you direct link of this indicator. So this indicator basically shows you that where the big players are present. So I have personally had some experience with कैसे big players सोचते हैं, because I had majority of my experience comes from looking from the global markets, not the Indian market. और उसके साथ साथ मेरा जो भाई है वो भी गोल्डमैन सैक्स के साथ $10 बिलियन प्लस फंड मैनेज कर रहा है. So how these people communicate, how these people manipulate, so I have a little bit of fair idea. So from that fair idea, I can say that you are no match for them. 85% of the times they win, 15% of the times they lose, and 85% of the time you and me, we all are retail traders, we lose, and they are the winners. They have Bloomberg terminal, they have any kind of analytics you can think of. They have flow data, they have central bank models, means what are the economic data coming up. They have central limit order book. They can see your whatever stop loss, no matter जब जहां पे भी stop loss लगा दो, they can see it. So there are basically no way to beat them except one. So उनका एक ही weakness है, and that is the weakness where you will have to capitalize as a retail trader. So उनका weakness है उनका size. They are mammoth in size. तो उनका मेन प्रॉब्लम है छुपना, कि ओवरऑल मार्केट में जब वो ट्रेड ले रहे ताकि इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो छुपना चाहते हैं मार्केट से. सो मेजॉरिटी टाइम व्हेन दे आर कंसोलिडेटिंग,
the market is consolidating, they are basically positioning themselves. So ये रेनबो का ये इंडिकेटर का पर्पस है, with the expansion and with the colors, it is basically showing the presence of the big players, not buy or sell. This green matlab big players are present, and what they are doing with the what that is told by the rainbow candle, that it is telling that they are basically buying, they are in a buying what they are doing. So this together forms the TMPV strategy. ये स्ट्रैटेजी का पर्पस है मुझे बेसिकली प्रॉफिट देना इन अ सिचुएशन जहां पे आई एम अ पर्सन जो जिसे फील हो रहा है कि स्टॉक का जो ये फंडामेंटल रीडिंग भले ही मुझे नॉलेज हो, आई फील इट इज अ बोरिंग. Now, at the same time, I do macro fundamental analysis of currency commodity, and with that, I know that fundamental is important. So basically, मैं खुद को अपाहिज बना रहा हूं by choosing not doing the fundamental part of the analysis. At the same time, खुद किसी को जानना चाहिए कि क्या उनका limitations है और क्या वो नहीं करेंगे. Otherwise, जितना भी आप practice करो वो होगा नहीं. So to protect me from this, I have understood that gem phase is very important. So TMPV strategy का पर्पस ही है कि this gem phase को निकालना. उसके लिए stock selection is a very important part. We go to the weekly chart. I want minimum this 3 is as, and I was strength score 70, RS status as राइजिंग बुल, स्पीडिंग बुल और एक्सट्रीम बुल, मतलब ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड स्टॉक स्पीड स्कोर मिनिमम 10. देयर ओनली दैट स्टॉक विल कम इनटू माय ट्रेडिंग वॉच लिस्ट, अदरवाइज द स्टॉक्स दोज आर गॉन. इस ये करने के बाद ब्रॉडली आई विल गेट 200-250 स्टॉक्स, among which I will have to find the 20-25 gem phase. और उसके लिए मेरा ट्रेड सिंपल है. एंट्री इज बाय सपोर्ट और बाय ब्रेकआउट. बाय सपोर्ट इज सेम एज एनी अदर टाइम फ्रेम या फिर सजलॉन. सजलॉन आई हैव टू मैनेज इन द वीकली चार्ट. मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं वाई. सो आफ्टर रेड कैप्स अ फुल ग्रीन कैंडल with ST Momo with me is a buy support chance. A level breakout, actual price closing above rainbow level, this is the level, that is a buy breakout trade. This logic is same in daily chart, 125 minutes chart, whatever is your time frame. अगर आप कोई भी स्टॉक्स में लेट हो गए, सपोज यू आर गेटिंग अ स्टॉक somewhere around here, इस जगह पे आपको स्टॉक मिल रहा है, this is where you are getting your actual buy level tha. First is FOMO quantity buy support, second another round of quantity ka chance tha buy breakout if the stock is satisfying your criteria in the weekly. If not, we better do the FOMO quantity at the buy breakout level and then add with the pyramiding rule. Pyramiding rule का already YouTube video available है. Or wait for the each and every criteria to satisfy to enter more quantity. और इस जगह पे अब जब मिल रहा है मुझे स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज अब एंट्री कर सकते हैं, कैन वी एंटर? Next, we ask the market. We don't ask any, and we ask our trading plan. Suppose rainbow ka minimum criteria is a full green candle. So when I ask it's the setup, it is telling me yes, you can enter. Second is, what is my risk management plan if the stock starts moving opposite side? Because that I have no control on. So my risk management is,
Maximum stop loss is, if I can see, it is very big. This size of candle basically means you are already late. Then what to do in this kind of situation? FOMO. FOMO is very helpful. First, quantity, kuch quantity say half FOMO. Enter. Enter the half FOMO. Then simply follow the rainbow pyramiding rule. Every time candle is making new high, you enter smaller quantity. And basically you are waiting for red caps like this. And after that, a full green candle or consolidation and a breakout to enter. Every time you get a red caps, you quantity you reduce by half. Suppose you are late entry here. Every time candle is making new high, you enter some position. When you get a red cap, you reduce the quantity by half. Then full exit, you can wait for a full red candle. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बेस्ट एंट्री इज तभी आपको डिनोट हो जाएगा if the candle sizes are relatively smaller. Such big candles means usually you are very late. So during stock selection, weekly RSI X play a part. First of all, not necessarily, but RSI X में हम लोगों को चाहिए majority of the momentum stays with us. But as the strength score and speed score जब satisfy होंगे, very likely the majority of the momentum criteria will satisfy. South Bank अपना criteria satisfy कर रहा है, बहुत क्लियर है ट्रेडिंग, क्योंकि ये जो ट्रेड हम लोग कर सकते हैं दैट इज बाय सपोर्ट एंड बाय ब्रेकआउट, सिंस दिस इज सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया. एंड बाय सपोर्ट कैसे करना है? ऑल्ट इंटर प्राइस एक्शन बुलिश विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक फुल ग्रीन कैंडल. एंड जैसे फुल ग्रीन कैंडल आ गया, कुछ चीज मैं नोट करूंगा. एसटी मोमो मेरे साथ है, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रेफर्ड क्राइटेरिया. प्रेफर्ड क्राइटेरिया और मिनिमम क्राइटेरिया में डिफरेंस है. प्रेफर्ड क्राइटेरिया शायद कभी कभी हम लोग मोमेंटम से पहले एंट्री कर सकते हैं. क्यों? कहां? फॉर एग्जाम्पल आई फोकस मैक्रो फंडामेंटल एंड करेंसी में मुझे पता है कि आज रात को फेडरल रिजर्व आ रहा है, और मुझे आई हैव क्लियरली आई नो द मोमेंटम विल कम आफ्टर फेडरल रिजर्व. So if I take a position, and I think Fed will do this. Last जितना बार जो भी मैं Fed का forecast किया हूं, every time it has match हुआ है. What the Fed will do, and वो CCMT codes का part. But if I have an idea, so in that case I am breaching the preferred criteria. But minimum criteria is something you don't breach, which is the full green candle. So I can place a full green candle alert. And majority case in my trading, I prefer ST Momo भी मेरे साथ. ये exception है, इसीलिए बोल दे रहा हूं. But ST Momo, then I will check, and I will check a few things in daily, that ये जो strength score, RS and speed score, इनका background red नहीं है. मतलब strength score is not in below 65, RS status is not bearish, and stock speed score is not negative. So as long as those are fine, I can start with the buy support trade. And where is the buy breakout trade? So my trade has one, I did buy support alert. Another I will do buy breakout alert. That means 38, 38.35. I will probably enter above 40, but I will prefer to have an alert of this level. और उसमें नॉर्मल सिलेक्ट कीजिएगा, क्रॉसिंग अप दिस लेवल. आई विल प्लेस 39. जैसे ही 39 का क्रॉस होगा, आई विल बी अलर्टेड. दैट विल बी अ बाय ब्रेकआउट ट्रेड. नाउ ट्रेड्स वी विल प्रेफर टू डू नियर क्लोजिंग. इसीलिए डेली चार्ट में जो ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग एक्चुअल टाइम फ्रेम इज 3 o'clock to 3:30. मतलब
सारे जो अलर्ट्स, मेजोरिटी जो अलर्ट्स ट्रेड हो रहा है, इवन इफ यू आर बिजी इन योर लाइफ, यू कैन डू द स्टॉक ट्रेडिंग शांति से. जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क फ्रॉम 3 to 30 इन योर ऑफिस. जस्ट फोकस ऑन विच आर द अलर्ट्स दैट आर कमिंग. जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं, क्या वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑन द क्लोजिंग? कोई स्पाइक तो नहीं है? एज लॉन्ग एज दोज आर फाइन, एंटर अ क्वांटिटी. ये जो मैं ट्रेड दिखा रहा था एनवीडिया का, मार्क मिनरविनी का, यहां पे एक ने कमेंट किया था ट्विटर पे कि मार्क, आरंट यू लेट? ये स्टॉक ऑलरेडी 115% दे चुका है. कोई नहीं जानता कितना दूर एक स्टॉक भागेगा. नोबॉडी नोज. एंड दिस कम्स फ्रॉम द ग्रेट मास्टर. मुझे बिलीव करने का जरूरत नहीं. एज लॉन्ग एज आपके मन में ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, that you have some superpower, whether you are doing Fibonacci, whether you are doing rainbow setup, that you have some superpower of prediction of what the stock will do, that is not correct. Look at this trade. I don't think any one of you are doing as trade as him. 334% return annually. So he is a great mentor जिनके बात से हम लोग सीख सकते हैं. I want to make clear that I think we are in a correction within a new bull market. वो सही थे. बहुत बार ऐसा होगा, my prediction is right, but I don't trade based on my prediction. That started off the lows in October 2022. But my opinions do not drive my trading. Sound principles and managing risk in real time does. The current tape is bearish, matlab price action is bearish. And this is important. I have no idea how much the market will correct. A great trader like him has no idea. Then how come every time कोई भी ट्रेड डालता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, CNBC TV 18, the first question you ask is what is the target? As if I have मेरे पास कोई crystal ball of prediction and I know the target. Nobody knows the target. So all we can do is try to flow with the market. अगर मार्क मिनरविनी ने लिख लिया कि he only trades in TMP2 stocks, he trades TMP2 stocks. It does not matter इस फेज में कितना रन दे रहा है. If Parijat buys after TMP2 consolidation के बाद he buys the breakout buy, he buys the breakout. He does not go for TMP1 buy support. और जब तक आप आपके ट्रेडिंग प्लान फॉलो करेंगे, ना मन में कोई रिग्रेट रहेगा कि ऐसा एक्शन, और ना मन में कोई फियर रहेगा. वी आर जस्ट डूइंग एज पर मार्केट इज आस्किंग मी. मार्केट के साथ चलने के लिए वी नीड द ट्रेडिंग प्लान. कम्युनिकेशन फाइनल करना पड़ेगा, किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं. I hope I was able to clear. Sir, even if the buy breakout comes in morning or in mid session, we always enter between. First of all, ये always बोल के कुछ चीज है नहीं ये ट्रेडिंग में. मार्क मिनरविनी का एक, उनका जैसे बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू देखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक उसमें कर रहे हैं कि कभी कभी लगेगा आई एम ब्रीचिंग माई रूल्स, बट विथ अ लॉन्ग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है. विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस धीरे धीरे वी अमेंड समथिंग्स. कुछ चीज है जो मैं अमेंड कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से येस बैंक में कोई बाई नहीं बनता, कोई भी बाई नहीं बन रहा येस बैंक में. बट आप मेरे वीडियो देख लीजिए. आई एम आस्किंग टू, एटलीस्ट मैं कर रहा हूं, मैं दूसरों को एडवाइस नहीं कर सकता आप क्या कौन सा स्टॉक खरीदेंगे. बट आई वॉज बाइंग येस बैंक. एंड येस बैंक के अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, you will see that there should be daily is my execution time frame, so here should be my exit. But जब मैं एंट्री कर रहा हूं, I have done looking, I looked at the monthly chart, explained it many times, got a reversal का chance आ रहा है, like it came here. And if I know that rainbow का reversal, if it is a true reversal, it will reach this level.
empty line 39 और मेरा रिस्क रिवॉर्ड वाज टू स्क्यूड 5:1 रिस्क रिवॉर्ड था. सो हियर लगेगा कि आई हैव ब्रीच्ड माय रूल, बट विथ एक्सपीरियंस these are not breaching of rules, these are amendments. अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में भी अमेंडमेंट किए जाते हैं और ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं दैट गेट्स अप्रूव्ड बाय ए पार्लियामेंट, then signed by our president. That similar process, who is the parliament? You. Who is the president? You. But the process is writing it up in the trading plan. कि कभी कभी मंथली चार्ट में जब बाई सिग्नल आता है, फॉर एग्जांपल मंथली चार्ट में ये शॉर्ट ट्रेंड बुलिश होना इज अ वेरी सॉलिड सिग्नल विच कैन गिव अ मल्टी बैगर रिटर्न. So this gets amended over time. अब मैं ये नहीं बोला कि candlesticks is not important, just wash up your brain. Rainbow is a wonderful tool to easily write your trading plan and have a process which if gets repeated, you make more and more money. मैं एक को जानता हूं जो अब क्या कर रहे हैं, ये सेटअप को लेके और तीनों लड़का बिठा रहा है. Recruited 3 person paying 21,000 rupees per month, and each 3 are trading different things, basically trying to build a trading desk. Similarly, I think different जो लोग हैं ऐसे ही ट्रेडिंग डेस्क बिल्ड करते हैं ग्रेजुअली. विवेक जी भी ऐसे ही बिल्ड किए हैं अपने ट्रेडिंग डेस्क, गोइंग बाय स्ट्रेटेजी बाय strategy. So Rainbow is a wonderful tool basically to write this trading plan, और वो trading diary is the amendment. तो candlestick में अगर आपका knowledge है, that means you know something about the Marubozu candle, then you know the importance of the shaved bottom. Shaved bottom का क्या importance है? I have read the beautiful book by Steve Nissen. Steve Nissen का जो candlestick का the mother book, I always in my readings I prefer to read the mother books जहां से original चालू हुआ है. For example, technical analysis का mother book is this one. This is where it all began. Technical analysis of stocks trend by Dr. Edward and McGee. So similarly, candlestick started with Mr. Steve Nissen, Japanese candlesticks pattern. So I'm not erasing that knowledge of mine. So I know the importance of a shaved bottom candle. And if I can see the gold, it is creating a shaved bottom candle going up like Marubozu. Evening non-farm payroll is coming up. So these are giving me early hints. So, but preferably importance is, yes, important है, especially जो beginners है, जो loss maker है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेट टिल क्लोज. उसका लॉजिक ये है कि प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट. हाँ, सब लोग बोल रहे हैं अगर प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट, इट बेसिकली एन इटर्नल फाइट, जैसे गुड एंड इविल का होता है, ऐसे इटर्नल फाइट बिटवीन बुल एंड बेयर. जैसे एक बॉक्सिंग मैच है, मैच खत्म नहीं होता बॉक्सिंग का जब तक बेल नहीं आता. और यही आपका क्वेश्चन का आंसर भी कर रहा है कि समटाइम्स वी गेट अ नॉकआउट इन बॉक्सिंग मैच. वी गेट टू नो व्हेन you breach this rule of closing, but it is always best of the best to wait for the closing. Unless closing is not over, game is not over, price action is not over. इसीलिए majority traders lose. Why? Because that is the axis they give less important to is this one. X axis का कोई भी importance नहीं देते. प्राइस एक्शन हर डिफरेंट बात बोलेगा इन डिफरेंट टाइम फ्रेम. ट्रेंड मोमेंटम प्राइस एक्शन जो बात करता है मार्केट, इट इज अ वेरिएशन कंपोनेंट ऑफ टाइम. टाइम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा. जो आदमी बिजी है
अपने पर्सनल लाइफ में फ्रॉम 1 o'clock से 9 o'clock to 4 o'clock, ही इज अ बिजी पर्सन, वेरी बिजी. देर इज नो पॉइंट लर्निंग इन, ऑब्वियसली लर्निंग का कोई एंड नहीं है, बट नो पॉइंट गोइंग फॉर इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, because you cannot devote that time. But you can be a profitable trader if you go back to the daily chart. If you go back to the daily chart, intraday जैसा position लेना will not be possible. कितना possible होगा? Obviously your trading plan will be deciding that. So kindly जो लोग है already rainbow batch में and still not written it, want more clarity on these subjects की quantity, FOMO quantity, कहाँ पे entry, exit, more clarity on writing trading plan, जिनको जानना है कि हमारा trading plan क्या है, मेरा पारिजात का, regarding currency, commodity और stocks. So these are the things we live trade. So इनका क्या trading plan है? So that we will start discussing from this Wednesday. Usually मैं grooming session gap में करता हूँ because it is coincided with a very important day जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है. तो वो डिसीजन नहीं आ रहा है until quite some time. साल में 8 बार वो डिसीजन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है. तो वो लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ आप लोगों को पुश किया जाता है कि रेनबो का जो मेन ग्रुप है जहां पे सीनियर्स अवेलेबल है, दोज हु आर सजेस्टिंग ट्रेड्स. रिसेंटली एक जन बहुत डीमोटिवेटेड हो गए थे बिकॉज ही गॉट पैनिक्ड. नाउ पैनिक का आई डोंट रिकमेंड, बट देखिए फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते. पैनिक आपका हुआ सो आई कैन नॉट हेल्प इट, बट बिकॉज माई रिलायंस रहेगा ट्रूथ पे. So we'll focus on truth and also in evidence. जैसे रेनबो दिखा रहा है, that is the profitable system. Similarly, evidence पे मैं rely करता हूँ. That's how I operate. So evidence wise, we are heading towards a major crash. And this is the end of the cycle. Every day, जैसे every time before the crash, this curve goes into negative. Never ever things have gone otherwise. इसका मतलब ये नहीं हम लोग प्रेडिक्ट करने लगे कि कब आएगा ये मार्केट क्रैश. वील हैव टू फ्लो विद द मार्केट. सो रिसेंटली क्या हुआ था, वन ऑफ द, you know, those who are come from Rainbow, the group 2023 ki he was suffering psychologically, not able to trade. So some of the seniors came in like Mr. Pratik Saraf ji and also gave motivational words and to so that he can participate, how he should approach their take they have given, because they are live trading, they are live trading, they are live trade suggesting. सो वो जो रेनबो 2023 ग्रुप में आप लोगों को डाला जाएगा, आई थिंक दैट विल हैपन आफ्टर आई होल्ड द फुल डे लाइव सेशन, मैराथन सेशन ऑन द नेक्स्ट फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन डे. इसके साथ साथ कुछ क्वेरीज ग्रुप में था, आई हैव टू आंसर देम. उसके बाद यहाँ पे जो क्वेरीज आप लोग किए हैं उनका मैं आंसर कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरीज आए हैं. CA मनु जी से ये क्वेरी आ रहा है. Sir, I'm a technical analyst based mostly on price action. Very good. I'll recommend that you go for the TMP understanding, trend, momentum, price action. But ये भी ठीक है, especially if it's an intraday strategy, area of demand and supply. This is more of a buy support, sell resistance trade of trade like of strategy. But I'm sure you have written your trading plan. I believe the technical setup of that can be used on any asset class. Obviously, if any asset, any setup that is जो हम लोग फंडामेंटल के साथ भी, नॉट फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो सेटअप हम लोग बना रहे हैं, वेरी लाइकली दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस एसेट क्लास. बट कब मेजोरिटी ऑफ द जो सेटअप है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है विद द एसेट क्लास. बहुत ही कम सेटअप बनेंगे जो विद द सिमिलर रीडिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैकडी यूज कर रहे हैं, अगर आप सेम सेटिंग ना यूज करके डिफरेंट के में बी, यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, या फिर इट विल बी बेटर, आपका एक्यूरेसी को और बढ़ाएगा.
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काइंडली इसको बिलीव मत कीजिए, मतलब मैथमेटिकली ट्रू है, काइंडली इस पे मत जाइएगा। ये दिस इज गेटिंग projected now in YouTube that if your system has a 50% accuracy, that with the stop loss and risk management you can become a profitable trader. True, but ये theoretical बात है। जब प्रैक्टिकली आप लाएंगे आपके अंदर स्लीपेज होगा, कभी कभी आप टायर्ड होंगे, कभी कभी आप नहीं कर पाए, ऐसा पॉसिबल है, आप उस टाइम पे स्क्रीन पे थे नहीं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीपेज होगा उसमें। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, नो मैटर विच एवर कोर्स यू डू, बेसिकली नंबर ऑफ एक्यूरेट ट्रेड्स इनटू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉल्स ट्रेड्स इनटू एवरेज लॉस। ये रेशियो इंप्रूव होगा, देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो इफ यू टेक मैथमेटिकली दिस एंड दिस आउट, ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे, यू बेसिकली गेट द एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी मैटर्स। तो ये बकवास है कि लो एक्यूरेसी, दैट इज ट्रू मैथमेटिकली, विथ 50% and 2:1 stop loss you can become a profitable trader. Similarly it's a stupidity कि अगर मार्केट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, आप 2:1 में बुक कर लिए कि मेरा भाई तो लॉस 2:1 है। सो दिस यू डोंट वांट टू डू। आप मार्केट के साथ बहना चाहते हो, यू वांट टू गो विद द मार्केट। सो योर जो आपका सिस्टम है, इट हैज टू हैव अ मेथड जिसके जरिए आप इसमें फ्लो हो सको। फॉर एग्जांपल आईओबी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी देख लीजिए, ब्यूटीफुल ये जो फ्लो हो रहा है। व्हाट इफ यहां पे आप चालू किए, आपका स्टॉप लॉस था, देन यू 2:1 आप बुक कर लिए, फिर ऊपर जा रहा है। नो, योर सिस्टम हैज टू हैव अ मेथड, जहां ऊपर जा रहा है यू कैन फॉलो, प्लस यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी every time with a rainbow. You can add more quantity. Kindly watch the YouTube pyramiding rule video. तो ऐसा system, I hope you have written it down. Kindly suggest the course you offer which only gives knowledge of the various concepts. Okay, that's an important question जो मैं attend करना चाहता था। Obviously rainbow का जो ये है, this is मोर ऑफ एन एक्सेस बेस्ड सेटअप। तो एक्सेस बेस के साथ साथ हम लोग क्लास भी लेते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट का। सो इट इज नॉट एनीथिंग particularly fixed. As we progress, different type of discussion goes on कि जो कैसे काइंड ऑफ शॉर्ट करना था, तो हम लोग एक ग्रूमिंग सेशन लिए कैसे शॉर्ट करना था लास्ट वीक। But technically देखा जाए, so this is more of an access based course which is for a limited time period, and this is a more fundamental concept on currency, commodity, global markets, bonds, Federal Reserve, सारे जो knowledge का part है, that is power packed into this one. So I think if one is going for the fundamental knowledge, so one should go for this one. I will give a fair warning regarding this. This part of the course is very vast. यहाँ पे जो लोग जंप करके आते हैं, दे सून फाइंड आउट, वो एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट कि सीखना। सीखने का जैसे सच में इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे आके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इतना बड़ा ओशन है, यहाँ पे सीखने का कोई एंड नहीं। सो आपका पर्पस क्या है? इफ यू वांट टू मेक मनी, सो उस हिसाब से आपको कहीं पर ना कहीं पे एंड करना होगा। सून यू विल फाइंड आउट कि आप जो मार्केट में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका डेली साइज है $2 to 3 बिलियन, और जो मार्केट दिस पार्ट ऑफ द कोर्स कवर करने जा रहा है, मैंने आई रिपीट 2 to 3 में आप ऑपरेट कर रहे हो, और जो मार्केट दिस वन इज गोइंग टू कवर, उसका साइज है 11,000। So it's a huge size, $11,000 billion, and more than that, it is a plus 11,000 plus. So it's a very huge market. जो लोग बाहर है, especially outside India, it can open new opportunity जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे या सोचे भी नहीं। So this is discussed. Warning part ये है कि the class will be in English.
I try to remain fair and objective. So as this part of the course is not covered fundamental, so I try not to cover fundamental here, except two. One is intermarket analysis, you get to get invited, and the Federal Reserve, you get invited. This course is pretty vast. आप जितना deep जाना चाहते हैं, you can dive as deep as much as you want. उसका कोई end नहीं है, but majority of the students खो जाएंगे if I continues to dive deeper and deeper. So workable knowledge जो है, जो आपको practical knowledge है, जो आप apply कर पाएंगे, so that will be discussed. Plus उसके साथ मेरा जो first mentor के ने जो inspire किया था regarding the crisis, how to predict crisis, how to trade in a crisis market. So those parts are covered as this part of the course. I think I am able to answer sirs का ये जो query था. Most of us need the, I think, renewal confirmation. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. Renewal confirmation is this 365 days you get plus 35 days, because आपको थोड़ा टाइम चाहिए ये सब ट्रेडिंग प्लान निकले के लिए. हड़बड़ी करके ट्रेडिंग नहीं होता. You need to have a relaxed approach. टेंशन करके ट्रेडिंग नहीं. एक भाई साहब आए थे फ्रॉम अ स्टॉकेज सोशल. वो ऐसे बात कर रहे थे कि सर आई डोंट हैव टाइम उतना देखने का. आई फोकस्ड ऑन 5 मिनट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी. आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग. तो इज दिस आप जीना चाहते हो अपने लाइफ की एवरी डे टेंशन फुल्ली टेंस्ड 15 मिनट्स? सम पीपल जस्ट लव दोज थ्रिल. So if not, there are other ways to become profitable as a wealth grower, and that approach, more relaxed approach, you can trade. So wealth growing fundamentally will also be discussed as this part. So these two are different codes. So broadly, if we combine this both the part, then you will actually come to know how I operate in the forex and commodity market. Because stocks, my strategy is this only, TMPV. But forex, my one part is there, which is fundamental and sentiment analysis. निरंजन जी पूछ रहे हैं सर एसडी रेनबो, आप पॉसिबली क्लाउड बेसिक का बात कर रहे हैं. जो लोग रेनबो में है और क्लाउड बेसिक मांग रहे हैं, दिस इज बेसिक. एक चीज आप लोगों को बोल दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज यू आर एक्टिंग लार्जली बेस्ड ऑन फोमो, fear of missing out. And because the setup that you already have, if you have subscribed to it, it is a much superior setup than this one. ये originally मैंने create किया था लोगों को समझाने के लिए about the TMP, trend, momentum and price action. But it is a good setup. It works also across different asset class. But मैं ये देखा, ऑब्जर्व, इट इज एन ऑब्जर्व, क्योंकि रेनबो सेटअप बिफोर इट बिकेम एनी काइंड ऑफ कोर्स, फर्स्ट आई gave lot of free access to different users to test this setup in the live market. Because कोई भी आप trading setup बना रहे हो, I have created several trading setup as per my previous work. तो उसमें one of the part है live market testing, उसमें feedback लेना different तरीके से, different लोगों से. So those things were done. So based on that, I have seen those who were deploying these two together were having a much deteriorate performance than those who are using these two individually. So SD Cloud Basic जो है, इसका जो भी calculation है, this is gets shared as part of the CCMT course. And you obviously also get the access of this course. But anyway, it's a calculation दिया जाता है. So if you want, you can make it. It's a simple, several EMA based setup. So रेनबो में इसका दिया नहीं जाता, but अगर रेनबो में लोग मांग रहे हैं इसको, what I will do, what I will and I can do is rather include it here as a setup. यहाँ पे I can include it as an SD Cloud Basic. बट ये इमीडिएट प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि जो और भी बाकी काम करने जैसे ऑप्शन का चल रहा है, बट इट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन.
Please explain the formation of these special candles in SD Rainbow. We above the high or below. We do the trading on the closing. ये जो candles है ये support important levels का काम करते हैं, especially if there is a double one. But if the original price, for example, original price का जब breach हो रहा है, breach के लिए हम लोग कैंडल टॉप नहीं, रेनबो कैंडल का टॉप इस्तेमाल करते हैं. लाइक दिस कैन बी द लेवल ऑफ ब्रेकआउट. I've already discussed, Shankar Dhimanji, how to keep emotions in check. Only possible way is to write your trading plan, sir. That will be guided if you are part of the course. बट दिस इज कॉमन टू एवरीथिंग. आप रेनबो के बियॉन्ड भी जाएंगे तो ट्रेडिंग प्लान के बिना रिपीट नहीं कर पाएंगे सक्सेस. सिमिलर तरीका कैसे रिपीट होगा? तो एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए जिसका वो सारे जो पार्ट है, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट, फिर एग्जिट, व्हाट इज द री एंट्री, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेनबो में आप लोगों को इनवाइट किया जाता है थोड़ा बहुत फंडामेंटल के लिए, because rainbow does not answer, rainbow unable to answer this question: what is the planning for a catastrophic situation like COVID-19 crash? I came to know about the COVID-19 crash in August 2019. So there is a structure to that method also. So इसीलिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल के लिए आप लोगों को इनवाइट किया जाता है. So आज के लिए we will not, sorry, we will not extend more than 1 hour 30 minutes. I tried जितना query था I will tried to answer. So 90 minutes का session से ज़्यादा नहीं करेंगे so that video recording watching is easy. The video recording will be uploaded soon in the YouTube, and then you will be able to refer to this if you want to refer. And the grooming class जो लोग specially Rainbow 3 batch में है, I will ask you again to attend. बहुत में आप लोग में से you have not written your trading plan, उसमें अभी भी full clarity नहीं है. Largely आप लोगों के बारे में सोच के और Rainbow 4 बैच वाले के बारे में सोच के ये ग्रूमिंग क्लास जल्दी लिया जा रहा है. सो इवन अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, इट इज लार्जली रात को होल्ड किया जाता है 8:30 बजे जब आप लोग ऑफिस से आ जाते हो. 1.5 आवर 2 आवर करके सेशन, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. So kindly make sure that you join that. Those two are the most important, 2 or 3. कोई भी ट्रेडिंग के लिए these 3 will be the most important. Thank you so much and happy trading. All the best wishes from my side.